students, welcome to Sri Siddhi Academics. I'm Amrita and I firmly believe that we should keep trying until we get it right. So let's start our trial for today. अलजेब्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हमने देख ही लिया था. अब चलते हैं एक्सरसाइज 8A में. Let's attempt some of the questions from there. I will not attempt all the questions, but if you want me to, then please let me know which questions you have doubts in. I'll definitely make another video to address them. Okay? So let's move to question number 1, exercise 8A. 1, question number 5, which says 1/3 of x multiplied to the sum of a and b. Okay? Now first हम ये देखते हैं 1/3 of x होता कितना है. 1/3 मतलब 1/3. Of x हमने पहले भी देखा था. Of x मतलब multiplied by x. मतलब ये 1/3 of x means 1/3 multiplied by x. पर हमने ये भी देखा था कि in algebra we generally don't use this multiplication symbol. So what will we write? It will be 1/3 multiplied by x, or we also write it like x/3 क्योंकि 1 into x न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में x है. So we multiply both of them, it becomes x/3, right? Then we have to multiply it with the sum of a and b. अब sum of a and b तो बहुत easy है, मतलब हमें a plus b लिखना है. And since it is a sum, हम यहाँ पर एक bracket देंगे to get it multiplied with x/3. So the answer is x/3 multiplied by a plus b has to be written with this kind of algebraic expression. Now we move to question number 7. Sum of x and the quotient of y/5. अब sum of x तो समझ में आता है, x लिख लेना है. Then it has to be added with something. What does it get added with? Quotient of y/5. अब quotient कब निकलता है? हमने ये पहले भी डिस्कस किया था. Quotient उसी केस में निकलता है जब हम डिवाइड करते हैं. So quotient कब किसका चाहिए हमें? y/5 का, मतलब y/5. So हो गया ना हमारा सारे कंडीशंस फुलफिल्ड. सम ऑफ x एंड द कोशिएंट ऑफ y/5. y/5 हो गया, x हो गया और उन दोनों का सम भी हो गया. So this will be the algebraic expression for question number 1(7). Okay. Now let's move to question number 1(9). Question number 1(9) says 2 less than the quotient of x by y. Now quotient of x by y, there are two variables. हमें confuse नहीं होना है. In whatever case, अगर एक constant हो और एक variable हो तो भी, और दोनों ही variables हो तो भी, we should not get confused. If quotient it's written in the question, it means it's asking us to show a division. So x by y कैसे लिखेंगे हम लोग? We'll write like this, x by y and 2 less than the quotient of x by y. 2 less than मतलब 2 कम है. x by y का वैल्यू जो भी आएगा उससे 2 कम, 2 कम, तो I have to write -2, right? This is the expression for question number 1(9). Now moving to question number 10, x multiplied by itself. X multiplied by itself. So x multiplied by itself is this x into x. अब हम s तो लिखते नहीं. We already know if a variable or if a number is multiplied to itself, it means x squared या फिर वो number squared. So this is how we write x to the power of 2 because x is being multiplied to itself. We have seen in the previous video. So this is the answer, x squared, for question number 1(10). Now we're moving to question number 1(12). It's saying thrice x. Thrice x मतलब 3 multiplied by x, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं 3x, right? अगर twice x बताया गया होता तो we would have written 2x. 4 times x बताया गया होता, क्वेश्चन में पूछा गया होता तो 4x लिखते, और 5 times x 5x, so on. So thrice x we will write as 3 multiplied by x or 3x. Thrice x added to मतलब प्लस साइन हमें दे देना है to y squared. Y squared we already know it means y to the power of 2. So this is the expression for
question number 1, 12, right? Now moving to question number 14, x cubed less than y cubed. Okay, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था 2 लेस देन वॉट एवर उसमें था, यहाँ पर y क्यूब्ड है पहले एंड इट इज लेस देन x क्यूब्ड. सो इस तरह से लिखना है y क्यूब्ड माइनस x क्यूब्ड, राइट? दिस इज द एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन, y क्यूब्ड माइनस x क्यूब्ड. y क्यूब्ड मीन्स y टू द पावर 3 और x टू द पावर 3, x क्यूब्ड. ओके, एंड जो लेस देन में जो बाद वाला आता है उसे पहले लिखा जाता है, फर्स्ट लिखा जाता है. लेस देन जब जहाँ पर भी क्वेश्चन में हो, ये जो स्टेटमेंट उसके बाद आता है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद माइनस साइन, बिकॉज लेस देन बताया गया है तो सब्सट्रैक्शन है. एंड देन द फर्स्ट स्टेटमेंट, आई मीन फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वॉट एवर इज रिटन बिफोर लेस देन, दैट कम्स नेक्स्ट आफ्टर द माइनस symbol. So we have done question number 12 and 14. Now moving to last question of question number 1, that is 15. The statement says quotient of x by 8 multiplied by y. Okay, so first we know quotient of matlab we have to write quotient of what? X by 8 we have to write like this, which is multiplied by y, right? Multiplied by y. So या तो we can write like this, or we can move one step ahead and remove this multiplication symbol and write x y by 8, क्योंकि actually ये y क्या है? y is nothing but y by 1, right? So numerator में x है, numerator में y है, so I multiply them, x y, और denominator में 8 और 1 multiplication होना है, right? x into y, 8 into 1. x into y, 8 into 1. So what it will be finally? xy by 8. Okay, either you leave it like this, just write x by 8 into y, this is fine, or also you can move one step ahead and write it like xy by 8. Both are one and the same thing. So end of question number 1. Now moving to question number 3, 2, it's written y into y into y 20 times. y has been multiplied 20 times. ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी अलजेब्रा का एड्रेस किया था. इट सिंपली मीन्स वी हैव टू राइट y टू द पावर ऑफ 20. 20 थोड़ा छोटा और राइट साइड अपर कॉर्नर में लिखना है. y के राइट साइड अपर कॉर्नर में 20 y से थोड़ा छोटा लिखना होगा. This represents y multiplied 20 times to itself, right? This is y to the power 20. So question number 3, 2 done. Moving to question number 13, it says 14 a into a into a into a. a कितना बार multiply हुआ है to itself? 4 times it has been multiplied to itself. So first I need to write the 14 because it comes first. 14 लिख लिया. Now I can write a to the power 4 because a has been multiplied 4 times to itself, and then this is b multiplied to itself once more. b into b हुआ है तो b squared, right? This is the answer for question number 3, 3. 14 a to the power 4 b squared. This is how we read it. Moving to question number 4, here we need to write in product form. So क्वेश्चन नंबर 2 इज 6 y टू द पावर 5. अब उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. सो पहले वाले क्वेश्चन में उल्टा था, रिवर्स था. इस क्वेश्चन में जस्ट उसका अपोजिट करना है. 6 लिखना है इंटू y इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ 5 टाइम्स. सो आई हैव टू राइट y इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y, राइट? So this is y multiplied to itself 5 times. That's why y to the power 5. So this is the answer for question number 4, 2. 6 y to the power 5. Now same thing we need to do for question number 4. 10 a cubed b cubed c cubed. So 10 पहले लिख लेना है. उसके बाद a multiplied by a multiplied by a. 3a is done. Now multiplied by b multiplied by b multiplied by b
multiplied by C, multiplied by C, multiplied by C. Alright, this is question number 4. Okay, so with this we complete exercise 8A. If you have any doubts anywhere, please let me know in the comment section. And please like, share and subscribe to my channel Sri Siddhi Academics. Thank you.